Today we'll do quadratic equation. Students, please share my channel, like, and please subscribe. There will be a bell for the subscription. You please touch that bell. You will get the notification, and you will not have to find the for your videos. Here we will do for standard 10, we will do maximum of the syllabus in this courses or in the video. Today we are doing quadratic equation, an equation with one variable in which the highest power is 2. Suppose we is known as quadratic equation. Suppose we have taken ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a standard form of quadratic equation. अगर हम ऐसे लेते हैं x plus 1 by x, then also it is a quadratic equation because it is x square plus 1 is equal to 0. So I can write this equation as this. So जिसमें पावर मैक्सिमम 2 होगा. अगर हम एक एक्स क्यूब ले रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर ले रहे हैं प्लस एक्स plus 1 equal to 0, then it is not a quadratic equation. Is not a quadratic equation. It is not a quadratic. So quadratic equation का main theory आप समझ लीजिए, जिसमें कि highest power एक वेरिएबल होगा और उसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम एक उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बोलते हैं. वेरिएबल विच हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2. तो हम इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड से हम इसको रूट्स निकालना चाहते हैं. यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. नाउ अगर हम ए को ए से डिवाइड बाय ए, अगर आप जानते हैं डिवीज़न आप 0 से नहीं कर सकते, इसलिए हमको लिखना बहुत ज़रूरी है कि it should be divided by a and a is not equal to 0. Divide by a whole equation. So this is ax square by a plus b by a into x plus c by a is equal to 0. Now I can write this as implied that this as x square plus b by a x, and I can write this as minus c by a. Now, how to make this a perfect square? You know what is the square, perfect square? A square plus b square plus 2ab can be written as a plus b whole square. Now here we have x whole square plus 2 into x into b by 2a. I can write b by 2a, so this 2a cancel, this is b by a into x. Now this b by 2a, I have to again add b by 2a whole square in order to get b square. B square is here, b by 2a whole square. Now this can be also subtracted. We have to subtract this one because we can't add in mathematics, we can't add anything in the equation unless until you subtract also that. So this is a square plus 2ab plus b square. See clearly, this is a square, this is b square, then this is 2ab. So this can be written as x plus b by 2a whole square. I can take this minus b by 2a whole square in the right hand side, 2a, so minus sign will be plus minus c by a. So I can write this as b square minus 4a square minus c by a, and this as x plus b by 2a whole square. In the quadratic equation we are getting this. So this can be written again, if you take the LCM, this is 4a square and this is b square minus 4ac. See here, this is a square, so we are getting here 4a into c. Now what is x plus b by 2a? So this is x plus b by 2a. You can take the square root, plus minus you have to take
this b square minus 4ac divided by 2a. So I can write this as x equal to minus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So I can again write this as 2a take common. This is minus b plus minus under root b square minus 4ac. Now the whole equation depends on this. If b square minus 4ac is greater than 0. See here, if it is greater than 0, then only you can factorize it. You can find the answer. So then you will get the real and unique answer. Unique roots of the equation. If b square minus 4ac is equal to 0, then equal roots. And if b square minus 4ac is less than 0, then imaginary roots. In standard 10, you don't have to study about this. This will be only imaginary roots. Now b squared minus 4ac. Learn this thing very clearly because you are having this type of question in your board examination. Here ax square plus bx plus c equal to 0 is a standard form of quadratic equation where a is not equal to 0. Then divide whole by a. Then ax squared by a plus b by a x plus c by a equal to 0. So x squared plus b by a x equal to minus c by a. I can write this. I want to change this in a plus b whole square के फॉर्म में हम इसको लाना चाहते हैं. तो यहाँ पर दो टर्म है और एक टर्म है बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है. बी स्क्वायर को हम ऐड किए यहाँ पर बी स्क्वायर मेरा है बी बाई 2a होल स्क्वायर. हम ऐड किए हैं तो हमको इक्वेशन के बाद इसको माइनस भी करना है. माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर से इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो मेरा यहाँ पर हो गया x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस ca. माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर. इस माइनस को वहाँ ले गए तो प्लस हो गया. तो यहाँ पर मेरा एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ टेक द स्क्वायर रूट. टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट. देन x प्लस b बाई 2a दोनों तरफ लेना है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4. देन यू हैव टू राइट x इक्वल टू प्लस माइनस 2. क्यों? क्योंकि देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज ऑल्सो 4 एंड प्लस 2 into plus 2 is also 4. So it is very essential that you write plus minus both the sign. So x equal to minus b by 2 plus minus under root b square minus 4ac. This b square minus 4ac is known as discriminant. D. b square minus 4ac is known as discriminant. And if d is greater than 0, less than equal to 0 and less than 0, you have to study the three things. D is greater than 0, that means b square minus 4ac is equal to greater than 0. तो यहाँ पर आपको रूट्स का कुछ वैल्यू निकलेगा. It will be real and unique. If it is equal to 0, then this is equal roots, and if it is less than 0, then imaginary roots. There will be imaginary roots. Now एक क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन. इफ -1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q. हाउ कैन यू फाइंड? हियर इट इज गिवन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q is equal to 0. Now suppose this is px equal to,
नाउ p माइनस 1 विल बी पुट माइनस 1 होल स्क्वायर. बहुत सिंपल है. दिस इज प्लस p is there and this is minus 1 multiplied by plus q is equal to 0. So I can write this as 1 minus p plus q is equal to 0. So I can write, imply that, put implementation sign. This is minus p plus q is equal to minus 1. Or I can write this as p minus q is equal to 1. This is equation 1. Now take the equation p minus 3. So this is equal to minus 3 whole minus 3 नहीं है, plus 3 है. तो plus 3 है तो 3 खाली पुट कर दो इसमें. 3 whole square plus 3 into p plus q is equal to 0. So this is implied that this is 9 plus 3p plus q is equal to 0, or 3p plus q is equal to minus 9. This is equation 2. Now solve 1 and 2. p minus q is equal to 1 and 3p plus q is equal to minus 9. I am adding 1 and 2. Add 1 plus 2. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. देन दिस इज 4p इज इक्वल टू माइनस 8. सो p इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ p इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस q इज इक्वल टू 1. पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 2 इन इक्वेशन 1. माइनस 2 माइनस q इज इक्वल टू 1. सो q is equal to minus 2 minus 1. So q is equal to minus 3. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जरूर लिख के भेजिए. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक बार फिर से देख लीजिए. पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है आप लोग को. p माइनस 1 हम रूट्स दे दिया है यहाँ पर. इफ minus 1 and 3 are the roots of this equation. So minus 1 put कर दो. minus 1 whole square plus p into minus 1 plus q equal to 0. So 1 minus p plus q equal to 0. So minus p plus q equal to minus 1. अब minus throughout common ले लिए हैं. So this is p minus q equal to 1. And here p3. तो हम x के जगह पर 3 पुट कर किए हैं. 3 whole square that is 9. 3p plus q equal to 0. 3p plus q equal to minus 9. 1 और 2 को सॉल्व करो. p माइनस q, 3p प्लस q इज इक्वल टू माइनस 9. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. 4p इक्वल टू माइनस 8, p इक्वल टू माइनस 2. अब p का वैल्यू 1 में पुट करो. 1 में वैल्यू क्या है? p का वैल्यू माइनस 2 माइनस q इक्वल टू 1. सो q इक्वल टू माइनस 3. थैंक यू चिल्ड्रन.